Good morning, dear children. Today we are again going to start with the same topic, connective tissue in animal tissue. And children, you know that there are three types of connective tissues according to the matrix. Jelly-like matrix, the tissues based on the jelly-like matrix, the tissues based on the hard matrix, and the tissues, connective tissues based on the fluid matrix. Again, there is bifurcation in these type of tissues. So in the first jelly-like matrix, we have seen there are four types of tissues: tendons, ligaments, areolar connective tissue, and adipose tissue. Then the hard connective tissue, which is also called as skeletal tissue, it consists of two types of tissues. One is bone and another is the cartilage. So children, last time we have studied about the cartilage. Okay, sorry, we have studied about the bone. So first of all, let me write hard matrix, also called as that the connective tissue which consists of hard matrix is called as skeletal connective tissue, and which is divided into two types. One is bone and second is cartilage. Children, we have completed bone last time. We have completed this, and this time we are going to start with the cartilage. Okay. So let us first of all tell you about bone a bit, so that you can easily differentiate between the bone and cartilage. So bone, I told you that it is a connective tissue which has hard matrix. That is why it is hard, rigid. Okay. And it provides a support to the body, it forms a framework, and the cells of the bones are called as osteocytes. Okay. Its matrix consists of a large amount of calcium and phosphate salts, and that is why the bone is hard. It consists of less amount of water, and whereas in the cartilage there is difference in the composition of matrix, and that is why being both of them belong to the hard matrix, they are skeletal connective tissue, still cartilage is different from bone. Okay, so now let us discuss first of all, see about its matrix. Its matrix is basically composed of carbohydrates, proteins, then water, and very less calcium salts, and that is why cartilage is softer, smoother and firm, smoother and firm connective tissue, whereas bones are very hard and rigid type of connective tissue. That is only because of the difference in their matrix. Okay. Now let us see about the cells. As I told you that in between the matrix there are cells. The cells of bones are called as osteocytes. Likewise, the cells of cartilage are called as chondrocytes. The cells of cartilage are called as chondrocytes. So, in between this kind of matrix, the cells of cartilage that is chondrocytes are present. Okay, and it forms our cartilage. Now, where is this cartilage present? What is its location? Now we are going to discuss about the location of cartilage. Where is cartilage present? The cartilage is present at the tip of the nose. As you all know, it is present in the pinna of the ear, this portion. This is not cartilage, okay, but this portion is cartilage. You can see that it is softer than the bone. You cannot bend the bone, but you can bend the cartilage. You can bend the cartilage, okay. But it regains its shape because of the presence of small amount of calcium salts and due to its composition. So it is present at the tip of nose, it is present in the ear, pinna, then it is also present in the larynx, the voice box. You have studied about the voice box now. So it is also present in the larynx. Then very importantly, it is also present in our trachea. Trachea, you know, trachea is windpipe.
Okay, you have studied about trachea, you have seen the shape of the trachea. It is not so smooth. It is like this. If I draw trachea, you have seen, you have studied in class 7, it is like this. C-shaped cartilaginous rings. Okay, that means this trachea is made up of cartilage ring. Okay, so it is made up of cartilage. Then, very importantly, the cartilage is also present between the bones. Between the bones. Now, which bones? Basically, it is present between the bones and the joints. For example, it is present in the knee joints, it is present in the elbow joints. Okay, you know that our backbone consists of 33 small bones known as vertebra. Okay, so this cartilage is present between these 33 vertebrae. If I make, so the vertebrae are like this, which makes our backbone like this. I have studied in class 6th. Okay, these are the vertebrae. Okay, there are 33 vertebrae in our backbone, and in between two vertebrae there is a layer of cartilage present. Layer of cartilage is present. So between the bones and joints के बीच में भी ये क्या होती हैं, जो हमारी ये है ये present होते हैं, cartilage present होते हैं. Okay children, so now if I told you that it is present here, so many places it is present in our body, what is the function? Why cartilage is present at these places? What is the need of presence of cartilage at these places? So now we are going to discuss about the functions of cartilage. First of all, it is smoother, firm and flexible. So it gives shape to many parts of the body, like it gives shape to our nose tip, because we know that the bone is only up to here. At the tip there is no bone. So how the shape we can get, that our nose will get the shape due to the presence of this cartilage. Okay. Then second function, if we will see that it acts as lubricant. It acts as lubricant. Children, you know about lubricants. Lubricants are those substances which smoothens the two surfaces when they move over each other. Lubricating oil we use generally in the machines. So likewise, so where it acts as lubricants, it acts as lubricants when it is present in between the joints and it is present in between the two bones, like in the backbone it is present, so it acts as lubricant. And thirdly, very importantly, which is related to this, that it prevents the wear and tear of bones. क्योंकि बोन्स हमारे दोबारा नहीं बन सकती हैं, तो दो बोन्स अगर कंटिन्यूअसली हम उठते हैं, बैठते हैं, झुकते हैं, तो क्या होती हैं, बोन्स क्या होती हैं, एक दूसरे से आपस में क्या कर सकती हैं, रब कर सकती हैं, जिसकी वजह से वो वियर एंड टियर यानी खराब हो सकती हैं, घिस सकती हैं. तो उसके लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए व्हाट इज प्रेजेंट, कार्टिलेज की लेयर वहां पर प्रेजेंट होती है. अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इट प्रिवेंट्स द कोलैप्स ऑफ ट्रैकिया. ट्रैकिया के कोलैप्स को ये क्या करती है, स्टॉप करती है, प्रिवेंट करती है. कोलैप्स को स्टॉप करने का मतलब क्या हुआ कि बाय चांस कभी हमारे विंड पाइप में एयर प्रेशर कम होता है, तो आपने देखा होगा जिन जगहों पर जहां पर एयर प्रेशर कम होता है वहां पर एक्चुअल में क्या हो जाता है, वो चीजें आपस में क्या हो जाती है, वो चीज पिचक जाती है. जैसे आपने बॉटल का एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने 7th स्टैंडर्ड में किया था, या आपने देखा होगा जनरली कि जब हम लोग प्लास्टिक की बॉटल्स में पानी भर के, नॉर्मल अगर आपने पानी लिया, गर्म पानी अगर आपने लिया है, ठीक है, और उसको आपने अगर किसी ठंडी जगह पे रख दिया या आपने उसको फ्रिज में रख दिया, तो आप देखेंगे कि वो बॉटल क्या हो जाती है, थोड़ी देर बाद क्या हो जाती है, डिस्टॉर्टेड हो जाती है ना, क्योंकि ठंडे होने की वजह से जो एयर होती है वो कूल डाउन होकर नीचे आ जाते हैं, ऊपर का स्पेस खाली हो जाता है, जिसकी वजह से वो डिस्टॉर्टेड हो जाती है. एग्जैक्टली ऐसी चीजें कई बार हमारे एयर पैसेज में भी हो जाती हैं ड्यू टू लेस एयर प्रेशर. जो हमारा विंड पाइप है वो कोलैप्स कर सकता है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या प्रेजेंट होता है, कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, विच प्रिवेंट द कोलैप्स ऑफ एयर पैसेज. सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ द कार्टिलेज. सो चिल्ड्रन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो व्हाट इज द स्ट्रक्चर
of any of the tissue which we have studied earlier also, and now we are also studying, then what is the location where it is present and what is the function. Okay, now because we have studied about the skeletal connective tissue and there are only two types of skeletal tissue, you should know the difference between bone and cartilage. Okay, you should know the difference between bone and cartilage. Now this topic is finished, and now we are going to start with the last type of connective tissue, which is fluid connective tissue. Okay, so let us see about the fluid connective tissue. Now let's start with the next type of third type of connective tissue, which is fluid connective tissue. As I told you, fluid connective tissue is that type of tissue in which the matrix is in the form of liquid. The matrix is in the form of fluid. Okay, so matrix is in the form of fluid. Okay, what does this matrix called as? This matrix is in the form of fluid, and in which in the matrix what are present? Cells are present. Okay, so this is the basic structure of the fluid connective tissue, in which the matrix is in the form of fluid, that is liquid. Let me write here liquid also so that it is easy to understand you. And after that, along with the matrix, what are present? Cells are present. So matrix is present and cells are present. Now there are two types of fluid connective tissue. One is the blood, another is the lymph. Okay, so first is blood and second is lymph. One by one we will study about both. So let's first start with the blood. See, as I told you, it is a fluid connective tissue. The blood also consists of two parts. One is the matrix part, and another are the cells. In the matrix, cells are present. So first of all, let us see what is its matrix part. What is it made up of? What does it call? The matrix of the blood is specifically called as plasma. It is specifically called as plasma. Okay. And if we talk about the cells, in the blood there are three types of cells present. Three types of cells are present in the matrix, that is plasma of the blood. So blood is formed by two things. One is the liquid matrix, which is called as plasma, and another are the cells, which are of three types in the blood. So what are these three types of cells? These are first are the RBC, WBC and platelets. Children, you know about these things because you have studied them already in class 7th, and already we know much about blood. Okay, because we go many times for a blood test and all. In the family also many people go for the blood test, so we know much about blood. So let us now discuss about its matrix and cells which are present in it. So first we will see about the plasma. Plasma is a pale yellow liquid. Okay, it is a pale yellow liquid, and if we see 90 to 95%, or we can say 92 to 95% of plasma is made up of water. इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम प्लाज्मा को ही देखें तो प्लाज्मा जो है वो इट इज पेल येलो लिक्विड. पेल येलो होता है, रेड नहीं होता है ये. और इसका जो कॉम्पोजिशन अगर हम देखें प्लाज्मा का, तो उसमें 92 से 95% तो क्या होता है, वाटर ही प्रेजेंट होता है प्लाज्मा का कॉम्पोजिशन अगर हम देखें. और उसके साथ ही प्लाज्मा में और क्या चीजें होती हैं? इन प्लाज्मा हॉर्मोन्स आर प्रेजेंट, एंजाइम्स आर प्रेजेंट फॉर डाइजेशन एंड मेनी थिंग्स. हॉर्मोन्स हमारी बॉडी से रिलीज होते हैं. देन कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो प्रेजेंट इन प्लाज्मा. अलॉन्ग विद दैट वेस्ट मटीरियल, नाइट्रोजनस वेस्ट जैसे कि यूरिया वगैरह
Okay, it is present in the plasma. Then carbohydrates and proteins, all these are present in the plasma. That means इसका मतलब ये हुआ अगर हम सिर्फ प्लाज्मा को अलग कर लेते हैं तो उसमें 90 to 95% वाटर है और जो बचा हुआ 5% है उसमें ये सारी चीजें आ जाती हैं. तो ऑल दीज थिंग्स मेक प्लाज्मा विच इज लिक्विड इन कलर. देन इफ वी टॉक अबाउट एंड फंक्शंस वी विल डिस्कस लेटर ऑन. ठीक है, वैसे फंक्शन सारे इसी से रिलेटेड होते हैं. अगर ये सारी चीजें प्लाज्मा में है इसका मतलब ये हुआ कि प्लाज्मा क्या कर रहा है, इन सब चीजों को ट्रांसपोर्ट कर रहा है हमारी बॉडी में. बिकॉज वी नो दैट ब्लड फ्लोज टू ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ आवर बॉडी. हमारी बॉडी के हर एक पार्ट में ब्लड फ्लो करता है. अगर ब्लड फ्लो कर रहा है तो उसके अंदर प्लाज्मा है. अगर प्लाज्मा है तो प्लाज्मा के अंदर ये सारी चीजें हैं जो सारी हमारी बॉडी में क्या हो रही हैं, सर्कुलेट हो रही हैं. नाउ इफ यू टॉक अबाउट द सेल्स, अगर हम सेल्स की बात करें तो मैंने आपको बताया 3 टाइप्स ऑफ सेल्स आर देयर, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स. तो आरबीसी यू नो वेरी वेल, रेड ब्लड सेल्स. जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं ये कैसे होते हैं, द रेड ब्लड सेल्स आर बाय कॉन्केव होते हैं, अंदर से चपटे होते हैं दोनों तरफ से. ठीक है, उनकी जो साइड्स होती है वो थोड़ी चौड़ी होती हैं. ये क्यों होता है, सो दैट सरफेस एरिया इंक्रीज हो सके. क्यों हो सके, बिकॉज रेड ब्लड सेल्स कंसिस्ट ऑफ हीमोग्लोबिन and hemoglobin carries ऑक्सीजन. तो ये जो ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं ना एयर से, लंग्स में आ जाती है हमारे और उसके फिर पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होती है, जिसके बिना हम लोग 2 मिनट के लिए भी नहीं रह सकते हैं अलाइव. तो ये ऑक्सीजन जो है वो क्या कौन ट्रांसपोर्ट करता है, हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट करता है. हीमोग्लोबिन क्या होता है, हीमोग्लोबिन एक केमिकल एक सब्सटेंस होता है जो इसमें प्रेजेंट होता है, रेड ब्लड सेल्स में प्रेजेंट होता है. दैट मीन्स रेड ब्लड सेल्स कंटेन्स हीमोग्लोबिन एंड दिस हीमोग्लोबिन क्या करता है, इट ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन टू द ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी. क्लियर. तो ये तो हो गया हमारा रेड ब्लड सेल्स जो कि कैसे होते हैं, बाय कॉन्केव होते हैं. आफ्टर दैट इफ यू टॉक अबाउट द व्हाइट ब्लड सेल्स, अगर हम व्हाइट ब्लड सेल्स की बात करते हैं तो द व्हाइट ब्लड सेल्स दे are also called as leukocytes. Likewise, red blood cells are called as erythrocytes. Red blood cells are called as leukocytes. Leukocytes जो white blood cells होते हैं, they form the defense system of our body and they protect us from germs. जर्म्स. इनका काम क्या होता है, डिजीज और जर्म्स के अगेंस्ट फाइट करना. ठीक है, और फाइट करके ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं. तो दे आर कॉल्ड एज ल्यूकोसाइट्स. नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इनकी कोई शेप नहीं होती. कैसे होते हैं, दे आर एमीबॉइड. एमीबॉइड जैसे अमीबा की कोई शेप नहीं होती ना, ऐसे ही व्हाइट ब्लड सेल्स की भी कोई शेप नहीं होती है. ठीक है, तो दैट इज वाई ये क्या करते हैं, दे इनगल्फ. जैसे अमीबा इनगल्फ करता है ना फूड, ऐसे ये इनगल्फ करते हैं फूड को. और फूड मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जो हमारी बॉडी में एंटर करते हैं और हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं. देन इफ यू टॉक अबाउट द प्लेटलेट्स दे हेल्प इन द क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड. ठीक है, ये क्या करते हैं, क्लॉटिंग करते हैं. क्लॉटिंग ऑफ ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं. तो जैसे ही हमें कहीं चोट लगती है, वी गेट इंजर्ड at any place, these platelets along with the blood they come out. As they come in the contact with the air, okay, the platelets releases a protein and this protein it forms the clot. Clot means एक hard covering form करना शुरू करता है and वहां से फिर क्या होता है, इसके ऊपर एक hard covering बन जाती है and no blood will come out further. So it helps in the clotting of the blood. It is a very important component of blood. ठीक है, इसीलिए हमें जब छोटी मोटी चोटें लगती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें ब्लड लॉस ज्यादा नहीं होता, बिकॉज अपने आप ही क्या हो जाता है, प्लेटलेट्स दे स्टार्ट क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड, दे रिलीज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट टाइप ऑफ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, दैट इज ब्लड. नाउ लेट अस वंस मोर सी द फंक्शंस. फंक्शंस में कुछ नहीं करना होता, ओनली वी हैव टू राइट द फंक्शंस ऑफ द कंपोनेंट्स. प्लाज्मा consists of 90 to 95% water, and secondly it transports hormones, enzymes, carbon dioxide, waste material, carbohydrates, proteins and all. Secondly, the second function is that the blood helps in the transportation of oxygen. The blood helps in the transportation of oxygen. The third function is it protects us, the blood protects us from the
diseases. It fight against the diseases, microorganisms which enter in our body. And the last function of blood is it helps in the clotting of the blood, so that during injury there is no much blood loss. Okay, so this is all about the blood, the first type of fluid connective tissue. The next type of connective tissue is the lymph. About lymph we will discuss in the next lecture. Okay children, so till then you just learn all these things and prepare for your